Good morning viewers, saya Marinikitan, Arab nikan sa Nltv Goodmorning News. Ajibi news kan detail debra na jagidi Bible verse kan sawa. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Jado thought of the day sawa. Live in a way that showcases God's love, inspiring others to glorify Him through your actions. Jado healthy tips sawa. What is dust allergy? Dust allergy, also known as dust mite allergy, is an allergic reaction to tiny dust mites that live in household dust. These mites are not the dust itself, but rather the allergy is triggered by the droppings and dead bodies. The reaction causes symptoms like sneezing, runny nose, itchy eyes, and in some cases, asthma-related symptoms. What are the common symptoms? Sneezing. Frequent or persistent sneezing is a hallmark of dust allergies. Runny or stuffy nose. Nasal congestion and excessive mucus production can occur. Red, itchy, or watery eyes. Eye irritation and itching are common symptoms. Coughing. Dust allergies can trigger coughing, especially at night or in the morning. Wheezing. A whistling sound during breathing, often associated with constricted airways. Shortness of breath. Difficulty breathing or a feeling of breathlessness. Skin itching. Skin rashes or itching, particularly on exposed areas. Facial pain or pressure. Sinus pressure and pain in the face. Fatigue. Dust allergies can sometimes lead to tiredness or weakness. Severe symptoms of dust allergy. Severe asthma attacks. In individuals with asthma, dust allergies can trigger severe and potentially life-threatening asthma attacks. Swollen eyes, lips, mouth, or throat. Swelling can occur as a result of an allergic reaction. Chest pain or tightness. Diagnosis. Your doctor may suspect a dust mite allergy if your symptoms are worse when you go to bed or while cleaning, when dust mite allergens would be temporarily airborne. If you have a bed, it may be more difficult to determine the cause of the allergy, particularly if your bed sleeps in your bedroom. Allergy skin test. Your doctor may suggest an allergy skin test to determine what you are allergic to. You may be referred to an allergic specialist for the test. In this test, tiny amounts of purified allergen extracts, including an extract for dust mites, are pricked onto your skin surface. Allergy blood test. Some people can't undergo a skin test because they have a skin condition or they take a medication that can affect the results. As an alternative, your doctor may order a blood test that screens for specific allergy-causing antibiotics to various common allergens, including dust mites. These tests may also indicate how sensitive you are to allergen. Treatment. The first treatment for controlling dust mite allergy is avoiding dust mites as much as possible. When you minimize your exposure to dust mites, you can expect fewer or less severe allergic reactions. However, it's impossible to completely eliminate dust mites from your environment. You may also need medications to control symptoms. What is dust allergy? Dust allergy, also known as dust. Jado news kan detail debra saw. Nagaland Chief Minister Nltv Chopra May 17 the State Alak High Court laga establishments nimide magbigina balance or inclusive legal system nimide urge krishe jundu bra society laga subsections ke serve kribo rural or marginalized communities kan ke milagina. Tree plantation laga program jundu High Court Bar Association bra Merima New High Court Complex te ayojan krishe dade kotha kora homoy rio bra customary law preserve kribule laga importance upper emphasize krishe. Libra krishe ki customary law jundu article 371 under the protected ase edito Nagaland laga legal framework karne important role play kre aro eduke modern jurisprudence sat respect kribule lage. Chief Minister bra state laga jai thaka struggle ki highlight krishe central funding pawole aro separate high court laga recognition nimide.
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और जस्टिस इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इमान बारे बिल्स क्राब बिशेदे भी रियो ब्रा कुशेगी नागालैंड दे अलग हाई कोर्ट मिडे स्टेट दो इत्या भी सेंटर ब्रा फाइनेंशियल सपोर्ट पाने नागालैंड दे इत्या कोई मा पे इंचसे कुशे इमान कोशिश करिले भी स्टेट के इत्या भी एकु ग्रांट दिया नहीं कुशे रियो ब्रा स्ट्रेस कुरिगिना कुशे की सेपरेट हाई कोर्ट लग इंफ्रास्ट्रक्चर दो डेवलप कुशे कुछ कोर्ट रूम्स जजेस रेसिडेंस और support facilities can include as Dimapur Municipal Council bra sub chanda ke khopor dishegi DMC laga jurisdiction bidor residential sanitation fees to revise kushe jundu boila 60 rupees thakishe ityado per household per month 80 rupees hobo kushe the revised rate do 1st April 2025 per effect kushe aro do sub residential households can applicable ase kun DMC laga sanitation services lo ase the revision do operational cost uthi thakya nimide aro sanitation services laga quality phal bra maintain aro improve koribole nimide ase edu karone sub residents kan ke edu revision ki janigina cooperate koribole kushe aro thik samede sanitation fees tibole onarat kushe Shokovi Assam Rifles Training Center Day at the station Barrett Lushejun to 230 recruits kude satta mahila bi thakishi tahan laga 44 weeks training khodum hala ka number even they bra dai kan ke disciplined aro capable soldiers they transform hui jage manishe ida reporter Musura Fali laga report sai jawa Assam Rifles के बहादुर ऑफिसर्स सरदार साहिबान जवानों रिक्रूट्स उपस्थित सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हमारे सुख दुख के साथी गांव बूढ़े व देश के कोने कोने से आए हुए अभिभावक आप सभी का असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के इस ड्रिल प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मुझे इस शपथ ग्रहण समारोह का निरीक्षण करने का सुअवसर फिर से प्राप्त हुआ। आज न केवल 190 साल पुरानी व देश की सबसे अलंकृत अर्धसैनिक बल असम राइफल्स जिसका जन्म सन 1835 कचार लिपि के रूप में हुआ कि स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, बल्कि आप सभी जो नए सैनिक हैं उनके व्यक्तिगत जीवन का भी एक नई सुबह है। सैनिक जीवन में प्रवेश करते ही आप राइफलमैन या राइफलवुमेन कहलाएंगे। आज आपकी उच्च स्तर की ड्रिल देख के मुझे संतुष्टि है कि आप सभी ने प्रशिक्षण के दौरान खूब पसीना बहाया है और निस्संदेह हमारा देश और बल का भविष्य सुरक्षित है। सभी नए 223 राइफलमैन और 7 राइफलवुमेन को मेरी शुभकामनाएं। हमारे केंद्र ने निस्संदेह अपनी भूमिका बखूबी निभाकर सभी रिक्रूट्स को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके लिए सभी इंस्ट्रक्टर्स व एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के सदस्यों को मेरी ओर से बधाई। इस केंद्र के सभी पर्सनल एवं रिक्रूट्स इस बात से भली भांति अवगत हैं कि असम राइफल्स की अधिकतर बटालियन सेक्टर मुख्यालय आईजीआर हेडक्वार्टर देश के विभिन्न राज्यों में अलगाववादी व उग्रवादी ताकतों से जूझ रहे हैं। जब एक बटालियन में एक नया प्रशिक्षित रिक्रूट जाता है तो उससे ये काबिलियत होनी चाहिए कि वे एक सेक्शन का जिम्मेवार व कारगर सदस्य बने। अपनी पटन की इज्जत, अपने बडी और अपने हथियार की हमेशा देखभाल करना। आज शपथ लेने वाले रिक्रूट्स के
कि अभिभावकों को मेरी ओर से विशेष बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नए सैनिक अपने परिवार की उन्नति एवं विकास के विशेष ध्यान रखेंगे और उनके प्रति अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे। एक बार फिर मैं उन सभी अधिकारियों, सरदार साहिबान, इंस्ट्रक्टर स्टाफ, एडम स्टाफ को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस लोहे का निर्माण किया है। हमारे बल के आदर्श वाक्य वैलर यानी वीरता, ग्लोरी यानी प्रताप एवं सैक्रिफाइस यानी बलिदान को हमेशा याद रखें। परमात्मा आपके सभी कार्यों में आपके साथ रहे। जय हिंद। असम राइफल्स के बहादुर ऑफिसर्स। Dimapur Simur Market Day, May 17 Day, BJP Nagaland Canberra, Tiranga Yatra Yujan Krushe. Operation Sindur Homoy, Indian Air Forces Kangi support Dikaigina. Paid Minister Jagab Zimomido Yatra the special case Segishe. March to Supermarket Day Shurushe, Aro, Walford to Burma Campus Traigina, TTSC Stadium Day, Kodum Krishe. Public, students, Aro ex-servicemen kan, Edu March Day Baglushe. I be the reporter Naboli Abdullah brought detailed reports size award. All of you on behalf of our government, heading to the clarion call of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. India is a peaceful nation and we had always believed in non-violence and we had followed the policy of peaceful coexistence with our neighbors and with the world since time immemorial. However, this time the integrity and sovereignty of a nation was intruded upon by the terrorists in our nation. No sane country will remain quiet when its citizens have been attacked and killed in a broad daylight. And therefore, we salute. Today we are having this yatra to honor and remember our armed forces who had fought for our nation day and night, protecting our motherland, keeping us all safe. This is the honor to our special forces on land, air and sea. And therefore we are having this yatra in remembrance of our armed forces. The whole nation join hands with our security forces and so the state of Nagaland. On behalf of the state of Nagaland, on behalf of the Honorable Chief Minister, Mr. Nltv ji, all of us are participating in today's yatra of the Operation Sindhu. So I wish all of us to express our solidarity with our government and our armed forces. And this is a message I would like to pass to all of you. Thank you. Dinobodo District Congress Committee Bra, May 17 Day, Dinobodo North Point de Bra, Samvitan Pajawapian Lishe. NPCC President S. Subungmaren Jamir Bra, Public Trust Rikan Gurbule, Unity Arogenian Effort Mantiche, AICC Secretary Christopher Dilak Bra, Nagaland's poor infrastructure be criticized Krishe. Aro NPCC leaders created a new Aro Siabok Jamir Bra, manual voting limite Congress legacy of Perbi highlight Krishe. Former Minister Kato Kidney Brabi State's political setup undemocratic condemn Krigina monocracy Matisha. Pishi kushi bayase achi amagan more than 23 years the Congress party has been suppressed by the opposition's government for last more than 20 years. Now we want to create the atmosphere in such a way that the friends among the friends, the families among the families, and we want to go ahead and to create the situation, the environment
where the mind is without fear. And to bring up that environment, we are screening out the party workers, those who are having the negativity mind, attitude, who are taking the name of a party in dislodging the party. We are screening out that situation in Nagaland. At the same time, we are looking forward the leaders who are sincerely giving their efforts, who have really struggled for more than 21, 22 years under a regime of the opposition-less party. At that situations, the Nagaland Pradesh Congress Committee, along with all the DCCs and SCCs, we are expecting from the AICC that our High Command should bring a positive way to act, and the AIC should play the vital role to bring the where the mind is without fear. We don't want any suppressions. We had enough suppressions from the opposition-less party. Now we want our High Command, AICC, that AICC should bring a open and the free of atmosphere where we can exchange our views together and sort it out the true facts where we are missing and where we are lagging behind and how we miss to elect our Congress MLA from our state. That is the stage where our Nagaland Pradesh Congress Committee, the Congress workers are facing problems. So we would like to appeal on behalf of the party workers that we'll always expect the EICC, the High Command, can bring the positive gestures and give the positive directives and make the environment friendly among the party members. Amar Nitya, kile constitution to save kurubo lage. Amar working president, Tuida pra, leaders pra, so koi dishe. Koa nisina, amar Naga mano, Congress to hole Naga political solution nimiti Congress kara kurise. 2023 dibi chi holibi amagan itu Naga political solution to hole Congress pra 2013-14 di amang kinaga pick up kurise itu nisna solution nimiti fight kurbo ko ina itu kurise minority Nagaland amar Naga manugan to amar state di minority nohoy holibi as a Christian kita India di kubro amang bi minority he ase to itu minority bi amaga protect kurbo lage koi kina Nagaland di Hindu holibi Muslim holibi kun chat holibi amar Naga mano as a Christian state sob ke equal rights dibo amagan itu nisna promise kurgina sob si tango ola do amar Naga political solution ekta ase youngsters karoni amar bhai phunigan nimiti apni bhai phunigan karoni nichor bacha karoni rasta kuli dibo lagibo amar 23 years mano opposition less kromambra amang hat ki pandikina raga nisna ragi ase polibi itu khuli dibo lagibo kogina aman sob achita itu sacrifice kurigina hado apni gange congratulations diase. Viewers, ini ada kata break law, saya tagi Nltv.
Welcome back, viewers. IBR News Council. Lota Students Union Bra Saturday din High School Living Certificate aro Higher Secondary School Living Certificate laga Dobers Kangi TBHSS Youth Center Wokha te felicitate kushe. HSLC Bra Dosta aro HSSLC Bra Jarda ke felicitate kushe. Governor's Award laga tin the recipients Kangi be acknowledge kushe. Private School Association, Mr. at Work, Elaniki, Father, DC Joseph, National, Zoe, Amen, Women, Chitao, Raja, Nena, it education, it curriculum, it a follow so that how she job. Marketing, Megana, Service Secretary, untuk itilah isusana, untuk tinggi China, okoli semua beli hitung sana, mana dia nak job, yana dan untuk itilah ini, karena 한참 쉬었어. 그러잖아, 사실은. 내가 National Education Policy 2020 오지 대판이나 이다 이때는 나죠. 뭐나 오지 Education Policy가 예에 주어지죠. 뭐 Holistic Development. 근데 이 카이안 장지 Humanity STEM이나 vocational training 초보가 안되나 어플리 그도 반나이가다 우사나 어장 초보가 또 스킬링 리마이 바나테 에테나이비 또 이소사나 보자 또 인그룹스에 이신의 조수 너 마켓 디만드나 이 에듀케이셔널 시스템부터 능력가 사나 얘들아 안에 누가 있지 나그네기 내가 우기 부다사 그레주트 내가 보스베트 이반데 오픈에 비해 야데 우리야 니 증랑 니 스킬도나 내가 콤바니나 내가 골멘 섹터리나 이마에 주어졌거나 우주소원에서 따라 너무 스킬인지를 생각합니다. 근데 나또 타마나 PM이 카우지나 너무 뭐지 뒤통수스다가 이번에 대단히 소외돼 실로시 실 프로그램 에디스 나의 방식이죠. 에디 실버스 스튜던트 저는 우리 방법이 추어졌으나 어차 무슨 데 못봤는데 All Commercial Vehicle Association, Wokha District Press, Saturday din, 11th Foundation Day, Lota Hall Conference Hall Day, Malaysia. Superintendent of Police Wokha, M. Ravisin Nui, Chief Case Tegishe, Aro, Motor Vehicle Inspector, Asaipe Going to Special Invitee Tegishe. SP Nui Bra, Law and Order Maintain Corrober, ACVA Kanki, Batay Tegishe. 롱런 수세 구조는 저 어쩌면 그런 데 지시고 아바로지 소사이티 못하시고 커뮤니티 못하시고 그저거나 애들 수수바 저저 소체가 아마 애들 저들래 책임만 전략 뭐라 그랬다고 했어 저 가면은 승하를 자리에서 초다이 거든 지금 어쩌다 말다 그래 가도록 멋지가 하나 주바이 또 주시고도 근데 아주 도전도나
Ini em sang atau kaya meeting ecajo sana juga banyak. Jadi cuma untuk di SCBA Wokha district. Respected Master of Ceremonies, General Secretary, our special guest, our Honorable Chief. Office bearers, Nltv public আৰু এতিয়া আজি program attend কৰা সময়তে আমি বুজিয়াত বিয়া টাইম আৰু বেছি difficult situation time দে আপুনি কাম need of the hour realize কৰি কিনা আৰু জানি কিনা এইটো ফৰ্ম কৰা আছে আৰু এইটো কৰি কিনা বেছি দুখ পাইছে আৰু বেছি sacrifice কৰিছে আজি আমি আহি কিনা 5-6 months হৈছে SSP Wokha Abanigan laga hard work laga aru initiative aru vision garni ami kya tak situation biya ho paane no any law and order problem no Meghalaya CM Conrad ke Sangmabra tourism boost kuribole aro heritage preserve kuribole Walyang Captive Living Root Experience Center nimide rupees 30 crore announce kushe. Project do trekking road upgrade kuribole aro public private partnership model community follow kuribole kan include ase kushe. Taibra indigenous culture ke promote kuribole karne one can music retreat de rupees 40 crore be reveal kushe. Union Minister Rajiv Ranjan Singh Bra May 17th announced Krishegi Triburado milk aro mass production day self-sufficient hobole dair ase. Taibra Krishegi Animal Husbandry, National Dairy Development Board aro National Fisheries Development Board laga central team khan July day state visit kuribole ase plan akiloi jabole. Minister Bra new for the TLPV milk plan Pamudia waste Kiwi কৈছে আৰু $365 चैनल पर फिर से एक बार के स्वागतम है। हम लोग अभी है अगरतला रेल स्टेशन पर और इस अगरतला रेल स्टेशन से एक बड़ी न्यूज़ ये मिला है। अगरतला जीआरपी थाना, अगरतला रेल पुलिस और जो इंटेलिजेंट ये विभाग है उन तीनों ने मिलकर अगरतला रेल स्टेशन से 6 को अरेस्ट किया है और इन 6 से भारत के पश्चिम बंगाल का इंडियन टाउट और 3 है और इन 3 बांग्लादेशी से 2 है लेडीज और 1 है जेंट्स और इन तीनों बांग्लादेशी को अगरतला जीआरपी थाना और रेल पुलिस ने खोजताछ करके एक खबर ये सामने आया है। ये जो 3 इंडियन टाउट है उन 2 गया लेडीज को और एक जेंट्स को काम के लिए ट्रेन से कर कलकत्ता पर जाने वाले थे। अभी अगरतला जीआरपी थाना और जो रेल पुलिस है और जो इंटेलिजेंस के डिवीजन है उन अरेस्ट किया है और इन 6 को आज पुलिस रिमांड लेके अदालत में पेश किया गया है। अगरतला रेल स्टेशन से कैमरा गौरंगा दत्त के साथ विक्रम खंडा का रिपोर्ट DY 365 अगरतला। এখন ভারতীয় যে 3 জন দালাল ওদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি যে ওদেরকে ওরা বাংলাদেশ গিয়েছিল, বাংলাদেশ গিয়ে ওই 3 জনকে নিয়ে এসেছে। তাদের উদ্দেশ্য এখানে ওদেরকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছে 2 জন মহিলা আর একজন পুরুষ যারা বাংলাদেশি। আমি তাদের নাম বললে বলতে পারি, একজন হচ্ছে ভগবতী দাস, একজন মিতাবালা দাস, একজন গোপাল কৃষ্ণ দাস। ওরা 3 জন হচ্ছে বাংলাদেশি। আর কলকাতার যে লোক 3 জন ওদের মধ্যে দক্ষিণ 24 পরগনাতে বাড়ি। নাম হচ্ছে অমর দাস, লালমোহন দাস আর সমর দাস। এই 3 জন
তো ওরা যতটুকু আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ওরা তিনজন বাংলাদেশ গিয়েছিল, ওদেরকে ওইখান থেকে ঘুষ পেয়ে গেছে। আমরা এখন পর্যন্ত যা পেয়েছি, আর তো ইনভেস্টিগেশন করে বোঝা যাবে আদৌ তাদের উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যটা কী। প্রতিদিনের মতো আমরা গতবার স্টেশনে গতকালকে 16 তারিখ 2025 স্টেশনে চেকিংয়ের সময় আমরা 6 জন সন্দেহভাজন মৃত্যু পাই। তাদের মধ্যে 3 জন বাংলাদেশি আর 3 জন কলকাতার লোক, যারা ওই 3 জন বাংলাদেশিকে বাংলাদেশ থেকে উঠিয়ে এনে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে। তো ওদের মধ্যে আবার তাদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে ওরা ওইখানে বিভিন্ন কাজে ওদের ওই বাংলাদেশি 3 জনকে ব্যবহার করার জন্য ছিল। তো বাকিকেও আমরা একটা এফআইআর নিয়েছি, চলছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কালকে আমাদের কালকে 16 তারিখে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন থেকে আমরা একটা ছেলেকে আটক করেছি। ছেলেটার নাম হচ্ছে গুলকুমা, বিহারের ছেলে। তো বিহার থেকে ও কপ সিরাপ নিয়ে এসেছিল। আমরা সেগুলো করেছি, ওকে অ্যারেস্ট করেছি। সেটার একটা এফআইআর হয়েছে। আমরা আজ কোর্টে পাঠাবো, ওকে মানছে। আর ইনভেস্টিগেশন চলতে দেখি আমাদের এলাকারও অনেকে তাদের যোগ্য থাকতে পারে, একজন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে যারা যে ছেলেটার কাছ থেকে মানে ন্যাশনাল স্কোপ সেটা উদ্ধার করেছে, মানে মূল্য কত হবে আর কত ডিমান্ড ধরেছেন স্কোপ সেটা? মূল্য তো আপনি দেখুন, এখানে প্রতি রেট আছে 211 টাকার মতো করে। তো আমরা টোটাল পেয়েছি 240 টাকা। তো কত হবে স্যার টোটাল? প্রায় 50,000 টাকা। আর ওই ছেলেটার নাম এবং বাড়ি কোথায়? ছেলেটার নাম হচ্ছে গুলো কুমার, বাবা লালন যাদব। ওর বাড়ি হচ্ছে পাটনাতে, বিহারে। ও কালই কাঞ্চনজঙ্ঘা দিয়ে এসেছে, যা আমাদেরকে এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। এখানে ত্রিপুরা দিয়ে ওকে রিসিভ করার জন্য, আর এটা এখানে আগরতলাতে এটা বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে এসেছি। যতটুকু আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি। আর তো ইনভেস্টিগেশন পরবর্তীতে যা আসবে আমরা আপনাদের জানতে। সে কি একাই ছিল না তার সাথে অন্য কেউ ছিল? এখন তো আমরা তো একা পেয়েছি ওকে, তার সাথে তো অবশ্যই থাকবে, আরও জড়িত থাকবে, যেমন লোকেলও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। তো সেই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন চলছে। যতপর্যন্ত যখন আমরা পাবো তো আপনাদেরকে জানতে পারবো। সেই মানে ন্যাশনাল সামগ্রীগুলি কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বা কিছু জানতে পেরেছেন? এখন যতটুকু আমরা তাৎক্ষণিক যা পেয়েছি সেটা তো আগরতলার কেউ ওকে সাহায্য করেছে। এখানে আগরতলার বিভিন্ন জায়গাতেই বিক্রি করার ওদের ট্রেন ছিল। আর বাকিটা তো পরবর্তীতে বোঝা যাবে ইনভেস্টিগেশনে বা রিমান্ড। Tripura South District Manbadar de Saturday Day Weekly Bazar Bra Wabas Kor Kurai Thakamoi Ekda Bike or Drug Birchantra Manu Area Pilonia Shanti Bazar Rasta de Laga Lagi Hushe Bike Day Buhina Thaka Dujun National Highway Degree Jeshe Ro Bishi Bia Bra Jogon Bashe Edu Jani Bole Barshegi Hadsa Bike Bishi Speed Bra Jula Karne Hushe Kwigina Hadsa Day Jogon Ba Khan Falcon Murang Singh Ro Biswachit Murang Singh Ase Ro Daikan Batichari Murang Singh Bra Laga resident ase. Hadsa laga khobor paigina Sandir Bazar Fire Department laga staff kan Phat Bra jagate pungchigina Jogom Ba Khan ke mudu tishe. Posli manuhan Bra late hursegi Birchantra Manu Bra loigina Belonia takte thick traffic management na thaka Bra enaga hadsa do hoi thaka guigina. Hadsa bichide Manbadar Outpost Police Station laga police Khan jagate pungchigina chanbin shuru gui dishe. Congress MP Sashi Tharoor Bra Saturday din Desh Bra Dai Laga Mujid La Kishe Kuile Hodai Dayar Ase Kushe Desh Laga Sarkar Bra All Party Delegation Lead Kurubale Taike Bir Junishe All Party Delegation Banna Laga Karando Alag Alag Desh Visit Kurigina Pakistan Sponsored Terrorism Khilaf Larai Kurubale Laga Se As I've said, the party is completely entitled to its opinion. Clearly, this being a government delegation, the government had its own opinion as to who they felt appropriate. And I'm very
I must say, unaware of any further contacts between the government and my party. And I think you should ask those concerned. As far as I'm concerned, I was asked, both in my capacity as a chairman of a parliamentary standing committee dealing with these issues, but also because very kindly the minister talked about my personal experience over the years in international affairs and the need for that experience and such knowledge as I may, such talents as I may possess, to be put to the service of the nation at this time. And I found that an absolutely essential, what can I say, answer to give, that certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. As I recall, and I may be wrong because I was neither in India nor in Indian politics at that time, a similar set of delegations were sent by Prime Minister Manmohan Singh to various regions of the world after the 2008 terror attacks. So this is not unprecedented, and it is certainly something which, to my mind, is a good reflection of national unity at a time when unity is important. As you said, you see this as an honor, especially to lead a delegation to US and countries like that. But are you sad or disappointed at the way in which your party reacted or your party colleagues reacted? Look, I mean, my party leadership is entitled to its opinion of my abilities or lack thereof, and I think that is really for them to explain. I have absolutely no comment to make on that. I'm honored to have been entrusted with the responsibility, and I will fulfill that responsibility, just as I have fulfilled every responsibility entrusted to me in my rather long working life, whether at the United Nations or in the Congress Party. I have fulfilled every task given to me with sincerity and commitment, and I intend to bring the same qualities to bear in my service in this particular mission. We are not talking about, it's a 10-day affair. I'll be going to Delhi. In any case, we have a parliamentary standing committee meeting on Monday and Tuesday on various issues, including on this particular issue. I'm assuming that I will get further details of the mission after going there, and we expect, I'm sure the delegation will get briefings from the Ministry of External Affairs, and we will proceed on that basis. I mean, I think that right now the focus is on a job of work that needs to be done for the country, and I'm truly honored to have been asked, and I will give my very best, as I always try to do. Have you informed the party when you received this invitation? Yes, indeed. No, I certainly informed them of the first call I got, which was 2 days ago. And I also mentioned to the minister who called me, who was a parliamentary affairs minister, that I assumed that he would be talking to the party leaderships of opposition parties, and he assured me that he would be. He also let me know that I was not the only one he was calling. There are other opposition MPs that he was calling. And I found it entirely appropriate, as I said, that the country should rally together on this particularly important issue. And now that I've been entrusted with the task of leading one of the delegations, I intend to give it my best shot. Is there any communication gap between you and the party? Because this happens continuously. This happens? This communication gap between you and your party? No, the party has my telephone number and they can call me anytime they like. I don't think there's any difficulty there. So as far as I'm concerned, I don't really see any communication gap. Sometimes one learns about certain statements from the media. That may be that we have other means of communication as well. But I don't think there's a particular gap that I'm... Union Minister Neeraj Singh Chauhan Bra Saturday tin Desh Pra India or Pakistan Chamla de third party can interfere grouply permit na dibo gushe. Tai aram gushe Desh Pra Shandiani Bule Hodai Dayar se Holibi Lagishe Quili Larai grouply bi Dayar se. Union Minister Bra Pakistan Kilaf tweet the issue si ase edu terrorism or Pakistan occupied Kashmir se. हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये आज का भारत। अगर हमारे निर्दोष नौजवानों को पहलगांव में आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया, तो हमने तय किया
हम पाकिस्तान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाए। पहले हमने सेना पर भी अटैक नहीं किया, लेकिन आतंक के सारे अड्डे केवल 25 मिनट में, रात को 1 बजे से लेके 1 बजे 25 मिनट तक सारे के सारे अड्डे तबाह कर दिए और कब्रगाह में बदलने का काम किया। तो भारत की बेहतरीन सेना ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की। हमारे देश पे ड्रोन मिसाइल छोड़े, पता नहीं ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और उनको गर्व था कि हमारी मिसाइलें बड़ा काम करेगी। लेकिन मैं भारत की सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। खिलौने की तरह उनके ड्रोन भी गिरा दिए और उनकी मिसाइलें भी टुकड़े टुकड़े कर दी। अब भारत के बच्चे उन टुकड़ों से खेल रहे हैं सीमा पे। बड़ा गर्व था कि हमने, पाकिस्तान 3 दिन में घुटनों पे आ गया। और ये बात साफ है भारत की तरफ से, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। भारत संप्रभु राष्ट्र, हम अपने फैसले आप करते हैं। दुनिया की कोई तीसरी ताकत दखल नहीं दे सकती। और अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल 2 मामलों में होगी, एक आतंकवाद और दूसरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा है, हमारा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब शक्ति की जरूरत होती, भारत ताकत का प्रदर्शन भी करता है। मैं अपनी सेना को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। ये आज का भारत है। हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये आज का भारत है। Pakistan bra cross border de Chalengrishi aro bishi damage wa bichide Saturday de Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha do border area visit kushe. Tai Armed Forces kan ke log paise aro tai kan laga bravery over praise kushe. Tai kushe ki American laga forces kan bra do civilians kan ke attack na kurigina khali terror camp de attack kura do precision bra respond dishe kushe. Dunya pura bra tai kan laga courage to tikhi kushe. Sinha do affect locals kan ke log paise aro kushe ki immediate madud provide kuribo kuigina. Tai kushe ki rehabilitation nimide officials kan prepare kuribo aro central sarkar ke bi madud mangibo kuigina janai dishe. MB Asududdin OIC International Outreach Delegation Brakusheki Pakistan terrorism role de tangor message send Korea do zero tolerance se OIC kushe India do bishi sal Pakistan laga terrorism de tuk pai tikise 7 all party delegations truly UN Security Council members do de visit kuribo kushe group the leaders to NTA or opposition India bloc se Parliamentary Affairs Ministry kushe ki leaders can do strong national consensus or terrorism fight kuribo karne choose kushe. मैसेज तो जो भारत सरकार का मैसेज है कि भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से सब तमाशा चल रहा है, क़त्ल गारतगिरी हो रही है, तो वो एक बताना पड़ेगा। फिर खंदार का प्लेन का हाईजैक भी है, हमको छोड़ना पड़ा उन जालिमों को। फिर 26/11 का वाक़या है, पठानकोट है, पार्लियामेंट अटैक है, उरी है, पिछले साल रीसी में वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था, फिर अब ये पहलगाम हुआ है। तो ये तो ये लोग ख़तरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। तो ये बात रहेगी। बट ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अब जाहिर है हम लोगों को जब नहीं मालूम कौन से ग्रुप में मुझे रखेंगे, क्या चेयरमैन होगा, कौन चेयरमैन होंगे, बातचीत जब होगी जी तो बहुत से उसमें चीज़ें होंगी जो अभी मुझे नहीं मालूम।
मगर जो भी होगा एक मगर भारत का तो पक्ष रखना पड़ेगा ताकि उनको मालूम भी हो सके। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है, हम लोग इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में खुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की ज़रूरत है जी। तो बहुत सी चीज़ें होंगी। अब जब मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो जब ब्रीफिंग होगी तो मालूम होगा और भी चीज़ें होंगी। मुझे तो लगता है कि ये लोग जब से उस वक्त कश्मीर में जो ट्राइबल लोगों को भिजाए थे, उसी वक्त हमको समझ जाना चाहिए था, ये हम समझे हैं। 48 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस वक्त से ये लोग ये तमाशा कर रहे हैं जी। और इनका एक स्टेटेड आइडियोलॉजी है जो अनरिटन है कि किस किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से भारत में नफ़रतों की दो समुदायों के दरमियान दीवारों को और उठा सकते हैं, किस तरीके से भारत की जो तरक्की है उसको रोका जा सके, चाहे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही हो या हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। तो ये तो उनके हमेशा Bengaluru or Bengaluru bra laka train services to 154 din nimide June 1 bra shuru hoina suspend hobo Sakelaspur to Surapamya broad section de railway electrification kam nimide koigina Southwestern Railway bra kushe notification is up train services kuin kan bon thakibo idu kan do Yeshwanpur bra Bengaluru Kodeshwara Express Bengaluru to Yeshwanpur Weekly Express aro Yeshwanpur to Bengaluru Dry Weekly Express is passenger associations can bra concern express kushe idu cancellation of aro kushe ki passengers kan karne alag options nai kushe tahan bra railway authorities kan ki urge kushe public laga convenience ke diktari na tegina tahan laga kam manage kuribole Colonial Sofia Kurishiki, Sister of the Riz Mahitya Nimidi, IMIM MP Asudin Bra, BJP MP Vijay Shaki Grafter Gripi Kwegina, Mangushe. Owashi Kushiki, Shala Government Bra Tikipai Shiki, Ekta Mahila Kun India's Armed Forces se proudly come create die over religious bias Hoyasi Kwegina. Tai Bra Shah the Cabinet Bra remove credible Nimidi, urge Kushi or Tai Lagakas Nimidi, Party Khan Bra Daiki Protect Rapper accused Kushe. Shah's pra remark dalaga video do viral hua biche de edu controversy do shuru she May 14 indoor de FIR dart kuri na se aro Shah do etia relief nimide Supreme Court de approach kuri na se kuri na janai dishe देखिए वो एक जिम्मेदार आदमी है, वो एक प्रदेश के स्टेट के मिनिस्टर हैं और आप कह रहे हैं कि हमने उन्हीं के पास उनकी बहन को भिजा दिया। अरे अबे वो कहाँ से उनकी बहन हुई? वो तो देश की बेटी है, देश की बहन है, वो तो हमारे आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। उसमें भी तुम मज़हब का चश्मा लगा के देख लिए और जोड़ दिए उसको उन जालिमों से, आतंकवादियों से। तो ये जो है ना, मेरे को लगता है कि ये जो मिनिस्टर ने कहा है वो उनकी हेट्रेड को जाहिर करता है एक समुदाय के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे आप? तो नहीं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि भैया आप हेट्रेड करिए, मगर आप हेट्रेड पाकिस्तान से आए हुए टेररिज्म की तरफ करिए। अगर आप ये समझेंगे कि भाई नाम मुसलमान है तो मैं हेट्रेड करूँगा, तो फिर उसका तो दुनिया में कोई दवा नहीं उस जहालत का, उस हेट्रेड का इलाज करने के लिए, सिवाय इसके कि बीजेपी सरकार उनको कैबिनेट से निकाले, उनको केस तो हाई कोर्ट ने एफआईआर बुक किया है, उनको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाएं। एक बेहतरीन मिसाल बनेगी ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कि आप इस तरह की बकवास नहीं कर सकते। और वो भी एक बहादुर ऑफिसर के बारे में आप इस तरह की गंदगी और हेटफुल कमेंट्स आप करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप गंदगी को देख के गंदगी ही बोलेंगे ना उसको।
अब क्या बोलेंगे आप उसको? गंदगी है वो, आउटराइट गंदगी है, आउटराइट आपकी नफरत है। और आपको ये भी लिहाज नहीं रहा कि आप एक मिनिस्टर हैं। अच्छा, मैं सुना कि वो इससे पहले भी अनाप शनाप बके थे मुख्यमंत्री, एक साबिका एक्स मुख्यमंत्री की वाइफ के बारे में भी। तो फिर क्यों नहीं रोक रही बीजेपी उनको? भाई, आप हटा नहीं सक रहे उनको। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना नहीं, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। आप जिस पार्टी की जिम्मेदारी है, तो आप जो रूलिंग पार्टी है उनको निकालना चाहिए। अब उनको नहीं। Viewers, Arabic at a break low, side TV, Nltv. Welcome back, viewers. अपनी का साथ Nltv Goodmorning News. हरियाणा लगा यूट्यूबर के सैटरडे दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स खान की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिया पर गिरफ्तार गुशे। यूट्यूबर लगा नाम दो जोयती मल्होत्रा से और ताई की न्यू आकर्षण एक्सटेंशन ब्रा गिरफ्तार गुशे। मल्होत्रा की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक और भारतीय न्याय सनिदा लगा भीतर दे गिरफ्तार गुशे। Saturday दिन बिहार अरारिया डिस्ट्रिक्ट फैमिली डिस्प्यूट निमित्ते एकता महिला ब्रा दालागा बच्चा चुकरी के शूट करी दिया निमित्ते ताई की अरेस्ट कुशे। एदु घटना तो चौकीपुर पोस्टी दे हुआ लगा से कुशे। पुलिस कुशे की दालागा बच्चा चुकरी बल्लावी 23 साल दो दालागा ब्रदर इन लॉ लोगों शादी कुशे एदु पर फैमिली डिटेंशन हो लाइसे कुशे। बल्लावी दो 2 बार शूट कुशे उले भी सर्वाइव कुशे कुशे। ताई दो इलाज निमित्ते बुर्ने दे लोग जैसे और इतिहास सेफ थे से कुशे। पुलिस कान एदु घटना पर छानबीन करे कोई ना जनाई दिशे। Former AFI President और Olympian athlete Samira Wala दो विश्वास से कि javelin star Neeraj Chopra ब्रा 90 m बा पिछले ताई ब्रा एदु की बनाई किना और भी फाल ब्रा थ्रो ग्रिबो कुशे। 27 साल और 2 बार ओलंपिक दे मेडल पा नीरज ब्रा Diamond League season opener the Friday day 90.23 m bonaise will be second day olaise. Germany's laga Julian Weber piche. Taibra Neeraj laga constituency facilities coaches are focus ki praise korigina predict kurese ki Neeraj pra 90 m over jogam na paigina throw koribo koigina. For a very long time we've been expecting Neeraj to throw 90 meters. He has consistently over the last few years thrown 88, 89, 89, close to 90 meters, 5 centimeters short, 10 centimeters short, 20 centimeters short. His opening throw in Doha itself was a very good throw, which actually set the pace for him to throw well. And the minute the javelin left his hand, he as well as we knew that it was going to be a very big throw, and it was 90.26 meters. So the first reaction is always, wow, fantastic, he's finally done it. And it's a great relief for all of us. There were a lot of people who were thinking that, will he do it or will he not? We were very confident that he will definitely do it. And we are really, really happy today that he has crossed the 90-meter mark. I think every athlete prepares for his own performance, and he had a lot of injuries, and he slowly come back from injuries. If you remember, in 18-19 he had an operation of his arm by Dr. Pardiwala. He recovered, he won a gold for India at the Olympic Games in Tokyo,
Then he went and won a gold in the World Championships at Budapest. He did 2.5 meters more than his winning throw in Tokyo in Paris, but he had to settle for a silver. He is a very, very consistent thrower, and it was just matter of time when then he had a groin injury which he recovered from. It was just Viewers, ito ajalaga weather report kanso. Beren, maximum 25 degrees Celsius to minimum 19 degrees Celsius. Dimapur, maximum 28 degrees Celsius to minimum 22 degrees Celsius. Kohima, maximum 21 degrees Celsius to minimum 17 degrees Celsius. Peak, maximum 22 degrees Celsius to minimum 16 degrees Celsius. Wokha, maximum 27 degrees Celsius to minimum 22 degrees Celsius. Zinobodo, maximum 19 degrees Celsius to minimum 14 degrees Celsius. Kifuri, maximum 23 degrees Celsius to minimum 19 degrees Celsius. Mokokchung, maximum 23 degrees Celsius to minimum 18 degrees Celsius. Tuinsang, maximum 17 degrees Celsius to minimum 13 degrees Celsius. Mon, maximum 22 degrees Celsius to minimum 19 degrees Celsius. Longland, maximum 19 degrees Celsius to minimum 14 degrees Celsius. Noglak, maximum 18 degrees Celsius to minimum 13 degrees Celsius. Ajalaga good morning khobor di dukan thaki she for more news and updates amnika sai thakibi Nagaland TV.